Hi everyone. So today we discuss about how to create incident request. Yeah. So everyone, like this is a user, right? Like user are facing Outlook related issue, and everyone, this is a ST team, service desk team. So everyone, if user are facing any issue, so first user communicate service desk team. Why? Because service desk team is the first contact person. Service desk team are handle FCR process, first call resolution process, right? So user can communicating on multiple mode, maybe communicating through Teams, right? Maybe communicating through Microsoft Teams, maybe communicating through chat, otherwise email, otherwise phone call, right? किसी भी वे आप कम्युनिकेशन किसी भी मोड में यूज़र कम्युनिकेट कर सकते हैं किससे आपसे राइट. So just imagine everyone, recently this username is Rabi, and Rabi are facing Outlook issue. So everyone, if user communicated through call, through phone call, so as a service desk you are receiving a call via via phone, right? Every companies are using one phone, right? So most of the companies are using Avaya. So आप क्या करेंगे, receive a call through Avaya. After that, in company time, company are using NDS portal. So in NDS portal, user all detail is reflected, like username, user employee ID and user RM name, right? So NDS portal में सब कुछ दिखेगा. Same time your responsibility is verify the user, like क्या user correct user है. So you can ask the user first name, last name, ask the user employee ID and RM mobile number. Each and every is fine. Then you can create a request, right? So अभी आपने ये सब वेरीफाई कर लिया, then your responsibility is open ticketing tool, right? So like multiple type of ticketing tool available in the market, like ServiceNow, ManageEngine, BMC Ramp, Jira, Jandex, Zoho, right? So lots of the companies are using ServiceNow and ManageEngine, right? So open a ticketing system, then go to the new request option and click on a incident. So first your responsibility is verify the request, like request is a incident, otherwise request is a service request. So you like this is a Outlook issue. So आपका idea लग गया कि Outlook issue is a incident, right? So everyone go to the new request option and first select request type. So request type just like an incident, right? So select incident. After selecting incident, then your responsibility is go to the status option. Status in the sense, in some ticketing tool everyone automatically select status new, but इसमें क्या आपको दिख रहा है, status is open, right? So no problem. After select a mode, like mode of communication, like phone, then select a impact, like impact is high. After that everyone select urgency. Impact, it's totally depend upon a user, is totally depend upon a issue, right? User को किस टाइप का इशू फेस हो रहा है ना. इफ यूजर is VIP user, so you can select impact is high, right? But user is normal user, so you can select impact just like a medium. After that everyone, अर्जेंसी, यूज़र के इशू को रिजॉल्व करने की अर्जेंसी क्या है, उसका लेवल क्या है ना. सो एज पर रिक्वायरमेंट बेस सेलेक्ट द अर्जेंसी. आफ्टर दैट सेलेक्ट प्रायोरिटी लाइक P3. देन एवरीवन सेलेक्ट रिक्वेस्टर. रिक्वेस्टर है कौन, जस्ट लाइक रिक्वेस्ट इज लाइक बेला मार्क, है ना. सो सेलेक्ट द रिक्वेस्टर. आप रिक्वेस्टर को सेलेक्ट कर लीजिए, है ना. सो click on a Vela mark. After that select requester location, है ना. बेस लोकेशन में भी रिक्वेस्ट लोकेशन है चेन्नई है, हैदराबाद, है ना, जो भी उसका लोकेशन है. आफ्टर सेलेक्ट कैटेगरी. कैटेगरी मीन्स यूज़र का इशू, राइट? यूज़र आर फेसिंग आउटलुक इशू, सो सेलेक्ट सम कैटेगरी. यूज़र आर फेसिंग हार्डवेयर रिलेटेड इशू, सो सेलेक्ट सम अदर कैटेगरी, है ना. सो एज पर इशू सेलेक्ट कैटेगरी, like select the services and
into the subject like Outlook issue. After that, all participants selected technician. Technician in the sense आप technician अभी select कर सकते हैं, otherwise कुछ time के बाद भी select कर पाएंगे. Then go to the add request option and create a request. See, request is ready. All participants, just imagine if you handle this issue. यदि आप इस issue को handle कर सकते हैं, आप इस issue को resolve कर सकते हैं, so directly आप go to the assign option and assign this ticket to our team. Like maybe your team is a software team, maybe your team is a infra team, maybe your team is onboarding team, है ना. जो भी आपकी टीम है, जिस भी टीम के आप मेंबर हैं, आप उससे ये रिक्वेस्ट असाइन कर लेंगे, राइट. लाइक अभी के लिए हम इसे ऑपरेशन टीम रखते हैं एंड असाइन दिस टिकट टू रेस्पेक्टिव टीम मेंबर. लाइक ऑपरेशन टीम का मेंबर जो टेक्नीशियन है वो है जेनिफर, सो असाइन दिस टिकट टू जेनिफर, राइट. Everyone, after that, Jennifer responsibilities communicate user via call, otherwise via remote support. अभी जेनिफर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यूज़र से कम्युनिकेट करना, यूज़र से लाइक कॉल के थ्रू, अदरवाइज रिमोट के थ्रू कम्युनिकेट करना आफ्टर इशू को रिजॉल्व करना, राइट. आफ्टर रिजॉल्विंग इशू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है चेंज द स्टेटस. ओपन है, सो ओपन से आप क्या करेंगे, select a hold, but after selecting a hold into the region, क्यों आप इस टिकट को होल्ड कर रहे हैं, like waiting for user for mission after save. एवरीवन, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एज पर कंपनी पॉलिसी आपको वेट करना पड़ेगा 24 hour. After 24 hour, if same within a 24 hour, within our shift, if user is replied, so directly you can close the request. But if user is not replied, so as per company policy, waiting 24 hour and start the strikes. Like first strike after 24 hour, after 24 hour second, after 24 hour third, means total duration of 72 hours. Within a 72 hour, if user is replied, so good, otherwise you can close the request without any communication, right. After everyone, this is a add the notes option in this section into the troubleshooting notes, how to resolve this issue, है ना. किस कैसे आपने आउटलुक के इशू को रिजॉल्व किया, लाइक अपडेट द आउटलुक, है ना, क्लियर द कैसे आप आउटलुक, आफ्टर दैट रिपेयर द आउटलुक, है ना. ये जैसे भी आपने ट्रबल शूट किया इंटू द आल ट्रबल शूटिंग, देन सेव, राइट. अभी यूज़र रिप्लाई कर दिया, सो गुड, अदरवाइज आपको अगेन आना है स्टेटस ऑप्शन पे एंड क्लिक करना रिजॉल्व एंड इस टिकट को आपको रिजॉल्व कर देना है. सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स एंड आपको ServiceNow अदरवाइज मैनेज इंजन का होल कोर्स करना है, सो यू कैन कम्युनिकेट eVision team, right. So eVision team will guide you how to join ServiceNow and manage engine course. Thank you everyone.